So, I've been made a specific request that as much as possible, if we could speak in both English and Hindi for the benefit of the audience, that would help. Sure, great, okay. So, I'll start with my first question. I'm so sorry. No, this is the culture of India that all three South Indians are sitting and you're asked to speak in Hindi. Good. Just a small correction, sir. I'm an Indian from the South, not a South Indian. Indian first topic. Good. तो जब सब कुछ हो ही गया है तो 10 साल किस चीज का इंतजार करना है? जो एक्सेलरेटर दबा दिया है आप लोगों ने, फिर इंतजार क्या करना है? जब सब कुछ है ही तो फिर अखंड है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और ऋतु आ गई है, चिंता मत करिए, शीघ्र ही फल भी दिखे। क्या ऋतु है ये? परिवर्तन। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात कही। हिंदू मुस्लिम ऋतु। नहीं, हिंदू मुस्लिम का इससे क्या मतलब है? जिस मैंने अखंडता की बात कही, मुस्लिम का तो एंगल ही नहीं आता। फिर मैं एक और बात कहता हूं। पीओके लाइए ना, फिर पाकिस्तान को जोड़िएगा। अच्छा, जो आपने पीओके की बात कही है, तो पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 70 साल में। मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में जहां कहीं भी लड़ाई होती थी, हमेशा कमजोर और छोटा कहता था ये बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है, पर हम इकलौते थे जो हम बड़े और ताकतवर होकर कहते थे कमजोर और छोटा हमें सता रहा है। पहली बार उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला था? शाह महमूद कुरैशी ने कि साहब वो आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। ये This is, I'm quoting verbatim, this is from the volume, 100 volumes of Mahatma Gandhi, his collection of his writings. Hindus should not harbor anger in their hearts against Muslims, even if the latter wanted to destroy them. Even if the Muslims want to kill us all, we should face death bravely. If they established their rule after killing all Hindus, we would be ushering in a new world by sacrificing our lives. None should fear death. ये हैं अपने महात्मा गांधी। तो अब मैं क्या बोलूं, but swiftly coming to say a few points that I would like to make. Sir, one thing you also have to be very careful now, because Supreme Court has adjudicated that you cannot abuse and insult Mahatma Gandhi. There is a judgment. That is the reason why I'm always saying Mahatma in front of Gandhi, and peace be upon him after Prophet Muhammad. जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद के बेटे जो कि उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आ रहा था, उसका इनकाउंटर हो गया है। ये बड़ी खबर इस पूरे मामले में इस वक्त अतीक के जीवन के 2 अध्याय। एक अध्याय उत्तर प्रदेश में योगी के राज से पहले का काल है और दूसरा योगी राज के बाद का काल। योगी राज से पहले तक पूरी ठसक और अकड़ के साथ अतीक अहमद टीवी इंटरव्यू देता था। अतीक के एक इशारे में उसके विरोधी मिट्टी में मिल जाते थे, लेकिन वक्त बदला और वक्त बदलते ही अतीक अहमद अर्श से फर्श I dream of night, I dream of day, I dream of watching it fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you website. You better keep running if you want to survive. ये भी कह रहे हैं कि मैं कोई सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगू, गांधी माफी नहीं मांगते। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनको माफी नहीं मांगनी है तो बेल भी नहीं जमा कराना था। महात्मा गांधी ने किया था एक बार, अंग्रेजों ने उनको सजा करी तो कि मैं पेनल्टी नहीं भरूंगा, माफी नहीं मांगूंगा, पेनल्टी नहीं भरूंगा, दंड भी नहीं भरूंगा, सब कर दिया। तो इन्होंने भी करना चाहिए था। मेरी जानकारी जो है 15,000 रुपए का मुचरका भरकर वो बेल लिए हैं जी। और दूसरा, माफी न मांगनी हो तो न मांगे, मगर सावरकर जी के लिए इस प्रकार के शब्द नहीं करने चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि इस देश के लिए ज्यादा से ज्यादा यातनाएं सहने वाले व्यक्तियों में से एक वीर सावरकर।
So while emperors and kings built large temples in the hope that they would be remembered, they were certainly not handing over the fiscal reins of their empires to temples. The reason the temples were rich was that they acted as banks. And much of this trade, this venture capital and so on that happened was funded by these temples. So these temples were very important as banks, and that's why they had such a lot of gold. Now, the Turkic invasion essentially destroyed this financial system completely. And as a result, this economic system on which this whole system was based fundamentally and totally collapsed. And this had devastating impact. Mr. Gandhi understood power and he fooled the entire country and the media of the time. All whitewashed what he was doing. Isn't it eerily reminiscent of what's happening today? So that is Mr. Gandhi. Mr. Gandhi never wanted to become prime minister. He believed in the trusteeship model, which means leadership. Not leadership, it means rule by proxy. You appoint a prime minister, but the prime minister will be controlled by you because you actually have all the power. You are the real source of power. The psychology of Pakistan, that how it is slowly dissociating itself from the South Asian history and veering towards its history as if it emanated from the Arabs. And you can clearly see how within 40, 50, 60 years, Pakistanis do not believe that they were part of India at all. You know, they're saying that we stemmed from Arabs. Our whole history is Arab. So you see, it's, when you talk of weakening a nation, in 40, 50 years, you've completely changed the whole canvas of a nation. What to talk of a university or a school. Here you have 200 million people thinking, completely differently. So that is why, history is so dangerous, the way it is. I have given up on the left completely, on their ability to reform or recover. Impossible. I have zero expectations from them. So I am not going to waste a single breath of mine whining about them anymore. The constant urge to expose them on social media. Hey liberals, what is your position now? They've already said their position. Why do you keep asking them for their position? I don't understand the sense behind it. It's almost as if you're dying for their validation. Or you're hoping that they will admit their hypocrisy. Someday they'll grow a conscience and a brain and they'll say, yes, I was wrong. In which case, I don't know if I should doubt their intellectual capacity or ours. Please do not watch this video if you have complaints with your life. Reason ये है, comfortable जो लोग हैं, please ना देखें. छोटे और कमजोर दिल वालों के लिए मैं बात ही नहीं करता हूँ. See, generally now youngsters, youth or anybody in this country, especially भारत में, बड़ी शिकायतें आई हैं कि यार हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, हमारे पास comfortable life नहीं है. What do you know about the problems? The guys, those who face the highest trouble and the biggest problems of this country, the least paid by the government, but has the biggest pride to be called the soldiers of this country and soldiers of Indian armed forces. ज्वलल्ललाट पट्टप
को भगवा कहते हैं। देव मुनि नारायण सारे सब भगवा में रहते हैं। रंग दे बसंती चोला के वीरों ने देश बचाया है। ओढ़ के भगवा विवेकानंद ने दुनिया में ज्ञान बहाया है। महापुरुष और बड़े महात्मा भगवा लहरा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटा कर चले गए। कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। अरे चलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे? और भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे?